Bismillahirrahmanirrahim. So we are discussing MCQs on importance of being earnest. So these are 100 MCQs. They're already available, but not with this discussion. So let's have a discussion on them. This will also be a reflection of the story. We'll be able to recall it. The Importance of Being Earnest is a play by Oscar Wilde. So it is written by Oscar Wilde, and it is his famous play, one of the best plays ever. The importance of being earnest falls in comedy of manners. So this is a play of comedy of manners. We already know what are the characteristics of comedy of manners. There is always a shift from town to village, village to town, and there are couples. Frivolities of society, they are shown in such plays. Uh, so following is not a characteristic of comedy of manner. So this is didactic. A comedy of manner play is never didactic. However, there are scandals, there is pun, like double meanings of language. There are couples, but there is no didactic ending. Following is again not a characteristic of comedy of manner, so it is poverty. So it is not written about poverty. It is always written about elite class, aristocratic class, their follies, the town and urban life, snobbery. Algernon Moncrief is waiting for. So when the play opens, we see that he is already awaiting Lady Bracknell and Gwendolen. Lady Bracknell happens to be his aunt, and Gwendolen is her daughter. So when the play opens, we see Algernon playing on piano. So he is practicing on piano. He's not a good player. Algernon Moncrief lives at Half Moon Street. So this is his address. Algernon Moncrief lives in a flat. He is mostly in debts. Like he's such kind of aristocrat who spends most of his life in merrymaking, and that keeps him in debts, and he has to pay much to the people. Lane is Algernon's butler. So Lane is a character that comes in the initial scenes. So he is the butler of Algernon Moncrief. Lane drinks wine secretly. So we come to know when Algernon is reading a book in which all the entries are written, kitna kharch hua, kitna spending hui. So from there we come to know that he too is to drinking. Algernon avoids his aunt, so he does not want to be with Aunt Bracknell, Lady Bracknell, whose also name is Aunt Augusta. Dash comes to meet Algernon before Lady Bracknell comes. So Lady Bracknell से पहले Jack वहां पे आता है और इसको मिलने के लिए. Lane has prepared dash sandwiches for Lady Bracknell. So these are cucumber sandwiches. So Lane special cucumber sandwiches Algernon के ऑर्डर पे बनाता है Lady Bracknell के लिए. Algernon eats all sandwiches before she comes. However, वो जैक को मना करता रहता है कि सैंडविचेस लेडी ब्रैकनेल के लिए हैं, लेकिन वो खुद सारे खत्म कर देता है. Algernon investigates Jack about the cigarette case, जो कि जैक का होता है और जैक उसे वहां पे भूल गया होता है लास्ट विजिट में Algernon के घर पे. So that was एक मिस्ट्री थी Algernon को, तो वो अपनी उस मिस्ट्री को क्लियर करने के लिए उससे सिगरेट केस के हवाले से कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा है. Jack says that it was given to him by his aunt. तो उसकी आंटी ने इसको गिफ्ट किया था ये सिगरेट केस. झूठ बोलता है वो. The cigarette case was actually given to him by Cecily.
So Cecily was his young ward. उसकी वार्ड होती है, उस गांव में रहती है, इस जहां पे जैक रहता है. सिसली इज हिज वार्ड, यानी थॉमस कार्डियो जिसने जैक को अडॉप्ट किया था. तो ये जाते हुए, ये मरते वक्त अपनी सिसली की जिम्मेदारी जैक को छोड़ गया. सो जैक वॉज गार्डियन टू सिसली. जैक, जिसका नाम जॉन भी है, जॉन वर्दिंग, इज नोन अर्नेस्ट इन द टाउन. वो यहां पे जब आता है तो अपना नाम अर्नेस्ट बताता है सबको. जैक रिवील्स दैट ही हैज कम टू लंदन टू प्रपोज टू ग्वेंडोलिन. सो वो ये बताता है कि मैं लंदन में आया हूं ग्वेंडोलिन को प्रपोज करने के लिए. Algernon dashed the notion of marriage, so he ridicules the notion of marriage. वो हंसता है इस पे. Algernon says that he has always suspected Jack a Bembrist. So this is a term. So Bembrist जो है ये एक term है, यानी ये Algernon ने खुद create की. So this is a term for those people who want to get rid of some commitment. तो उसके लिए उन्होंने कोई एक्सक्यूज तैयार किया होता है, तो उस एक्सक्यूज को वो बेम्ब्रिस्ट कह रहा है. सेसली वॉज ग्रैंड डॉटर ऑफ थॉमस ओल्ड थॉमस कार्डियो, जो कि जैक को लाइक अडॉप्ट करता है बचपन में, जिसको जैक मिलता है. तो वो उसकी ग्रैंड डॉटर थी सेसली. Cecily lives at Jack's place in the country under the guidance of Miss Prism. So Miss Prism governess है Cecily की. Miss Prism is Cecily's governess who takes care of her, उसको पढ़ाती भी है. Jack cannot entertain himself in village, क्योंकि village में he says कि I have plenty of people around me, जिनकी responsibility मेरे पे, और मैं वहाँ बड़ा serious kind of person हूँ, तो मैं amusement के लिए लंदन आता हूँ. Jack needs an excuse to go to London. कि मैं किसी कोई बहाना चाहिए उसे बार बार लंदन आने के लिए. सो इसीलिए उसने वो बेम्ब्रिस्ट के ख्याल रखते हुए he has invented a young brother who is wicked. तो उसने एक ऐसा फर्जी भाई अपना बनाया हुआ है जो कि किसी ने नहीं देखा और गांव में. तो वो विकेड है और वो हर वक्त किसी मुसीबत में फंसा होता है, स्पेशली वीकेंड पे. तो जैक को उसके प्रिटेंस में हमेशा आना पड़ता है लंदन. Jack's people know that he goes to town every weekend to solve the problems created by his brother. कि हर वीकेंड पे उसका भाई कोई ना कोई मसला खड़ा करता है, तो उसका जाना जरूरी है. Algernon confesses that he has invented an invalid in the country named Bunbury. Algernon also confesses कि उसने भी एक ऐसा फर्जी दोस्त बनाया हुआ है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता. सो बम्बरी उसका नाम है जो कि बीमार है. तो जब इसे कोई काम कहा जाता है तो ये उस बीमार दोस्त का बहाना बना के निकल जाता है. सो एल्जर्नन बम्बरी का बहाना बना के गांव यानी कंट्री साइड पे जाता है, और जैक अपने भाई अर्नेस्ट का बहाना बना के शहर की तरफ आता है. जैक इंसिस्ट दैट ही इज थ्रू विद अर्नेस्ट. सो जैक कहता है कि माय वर्क विद अर्नेस्ट इज डन. आज मैं ग्वेंडोलिन को प्रपोज कर दूंगा और उसके बाद अर्नेस्ट का नाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मुझे जरूरत नहीं रहेगी. Algernon maintains that he will need him more than ever if he marries. कि शादी के बाद तो अर्नेस्ट की जरूरत या बेम्बरी की जरूरत ज्यादा पड़ती है. इंसान किसी न किसी बहाने से घर से निकलना चाहता है, तो अगर ऐसा बहाना नहीं होगा तो काम खराब हो जाएगा. So the play is full of oxymorons and paradoxes, जो कि कॉमेडी ऑफ मैनर का भी एक खासा होता है, और इसमें तो ये बहुत ज्यादा है. In married life, 3 is company and 2 is none. So this is paradox. Rather, it is 2 is company and 3 is none. Algernon tells Lady Bracknell that he will be unable to attend her dinner tonight as Bunbury is ill. So he's already told anticipatingly कि उस डिनर में मैं शिरकत नहीं कर सकूंगा कि बेम्बरी बीमार है. Algernon takes Lady Bracknell to music room because he's giving opportunity to Jack and Gwendoline. और इसकी बेस पे वो उसे कहता है कि तुम मुझे खाना भी खिलाओगे.
सो वो बहाने से उसको ले जाता है ताकि जैक ग्वेंडोलिन को प्रपोज कर ले. For this opportunity, Jack will take Algernon to a dinner. Lady Bracknell's name is Augusta. उसका real name Augusta है. She was directly coming from the house of Lady Harbury. So she says, I am coming from the house of Lady Harbury right now. Lady Harbury का husband जो है, he recently died. Lady Harbury's hair was turned to dash with grief, so it was turned to gold with grief. So this is amusing. Like उसका husband बन गया और उसने बालों को golden color कर लिया. So gold here means like उसने अपने बालों को नया रंग दे दिया. That she was now ready for another husband in this way. And this also shows कि उसको कोई दुख नहीं था. So एक satire है society पे. Augusta asks several questions from Jack. She rejects Jack in the end. And she rejects him because his parentage is not clear, that he does not know anything about his parents. Jack says Thomas Cordew found him in a handbag. तो एक स्टेशन पे थॉमस कॉर्डियो को जैक मिला था एक हैंडबैग के अंदर. Jack tells Gwendolyn his address, which is overheard by Algernon. ग्वेंडोलिन एक दफा चली जाती है और फिर वापस आती है और इससे एड्रेस लेती है. तो अल्जर्नन उसे सुन लेता है और अपनी कफ्स के अंदर उसको लिख लेता है, शर्ट के कफ्स में. अल्जर्नन प्लान्स टू गो टू सी एंड मीट सेसिली. मिस प्रिज्म seems interested in Dr. Chasuble. तो डॉक्टर चर्चबल वहां का एक रेक्टर है, रिलीजियस पर्सन है. So Dr. Chasuble is rector of the church. Dr. Chasuble flirts with Miss Prism. So यहाँ पे एक religious जो लोग हैं उनके ऊपर भी satire है humorous manner में. Dr. Chasuble takes Miss Prism to a walk. एक walk पे लेके जाता है उसको. Algernon reaches there as Earnest. क्योंकि उसने बताया होता कि मैंने अपना भाई बनाया हुआ है Earnest. तो वो Earnest wicked brother बन के इसके घर पे आ जाता है. Gwendolyn and Cecily both love Jack and Algernon respectively because of their name. So Gwendolyn को Jack इसलिए ज्यादा पसंद होता है और Cecily को Algernon यानी Earnest इसलिए ज्यादा पसंद होता है क्योंकि इनके नाम Earnest हैं. उसके अलावा और कोई खास रीजन मेंशन नहीं की गई. So both the girls wanted to marry a man named Earnest. So ये उनकी एक बेवकूफाना किस्म की सोच होती है कि हम उस बंदे को प्यार करें, शादी करें जिसका नाम अर्नेस्ट हो. Cecily tells Algernon that they were already engaged. हालांकि वो पहली दफा मिले लेकिन उसे बताती है कि हमारी तो एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है. और वो कब हुई? जब से जैक ने बताया कि मेरा एक विकेट ब्रदर है. तो नाम सुनते ही she was engaged to him. Miss Prism urges Chasuble to get married to a mature lady. So she is referring to herself. वो अपनी तरफ इशारा करती है कि शादी कर लो. Jack comes and tells his brother that his brother is dead. क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया and he now has given the address of his house to Gwendolyn. So उसे लंदन जाने की जरूरत नहीं है. But he does not know कि Algernon Earnest के प्रेटेंस में ऑलरेडी उसके घर पे मौजूद है. Chasuble has same lecture of each event. So Dr. Chasuble is not a learned person. वो शादी ब्याह मर्ग हर जगह पे एक ही उसका लेक्चर है मनोसलवा से रिलेटेड जिसको वो सुना देता है. Jack says that his brother died in Paris. Jack requests Chasuble to Christian him again because he wants now to change his name. हालांकि this is done once in life, but Chasuble, since he is corrupt clergy, so is ready to do so. Algernon is also planning for christening, so he also wants to change his name. Both are going to christening to change their name. Cecily tells Jack that his brother is inside. जब वो कहता है कि मर गया तो वो कहता है वो तो भाई अंदर बैठा हुआ है. So Jack is shocked to see Algernon, but he cannot say him anything क्योंकि उसको इसका राज पता है. Jack prepares to send Algernon back. Gwendolyn arrives at the scene.
at the very moment, वो भी आ जाती है पीछे. Gwendolyn and Cecily soon become friends, and both are shocked to realize that both of them love Ernest. क्योंकि असल नाम तो इनको नहीं पता होता, तो दोनों को हैरत होती है कि हम दोनों एक से ही प्यार करते हैं या शायद एक ही बंदा हमें बेवकूफ बना रहा है. Girls are angry to know that both men are not called Ernest. उन्हें गुस्सा आता है when they know कि दोनों का नाम असल में Ernest नहीं है. Lady Bracknell arrives and surprises the couples. तो उस कपल को सरप्राइज कर देती है Lady Bracknell. She gives her consent for Cecily, and when she comes to know that Cecily has a large fortune. तो ग्वेंडोलिन की तो वो जैक से शादी नहीं करती, लेकिन सेसिली की शादी अल्जर्नन से अलाउ कर देती है क्योंकि उसके पास जायदाद ज्यादा होती है. Jack says that Cecily can't be married without his consent until the age of 35. कि उसकी शादी मर्जी के बगैर वो शादी नहीं कर सकती. Augusta is not willing for Gwendolyn's marriage with Jack. क्योंकि अगेन वो पेरेंटेज वाला इशू होता है, वो से अगर पेरेंटेज नहीं क्लियर तो ये भी एरिस्टोक्रेसी की एक शान दिखाई गई. सो दिस इज लाइक अबाउट द सेम थिंग कि उन्हें इस नाम से इनकी शान शौकत में और पेरेंटेज वगैरह उनके लिए बड़ी मैटर करती है. क्या थैंक यू मिस रामेश, आई एम फाइन एंड आई होप आई कैन गो विद 3 slides, 2 more lectures inshallah. Thanks for your concern. So Chasuble enters and announces that he is prepared for christening. So Chasuble अपनी तरफ से christening का system ready करके आ जाता है. Chasuble says that he will leave and mentions that Miss Prism is waiting for him. So हर बंदे को ये अचानक ये आवाज सुनाई देती है, ये नाम सुनाई देता है Miss Prism का. So especially Augusta, she is startled to hear the name Miss Prism. So Miss Prism का नाम सुन के Augusta यानी Lady Bracknell surprise होती है. Miss Prism is shocked to see Lady Bracknell either. वो भी expect नहीं कर रही होती है उसे, and both of them know each other. Lady Bracknell accuses her of kidnapping a baby boy from her house. कि तुमने baby boy चुराया था. This incident happened 28 years ago. Miss Prism reveals that she accidentally left baby in handbag. She lost the handbag at Brighton railway line near Victoria. So this is about both. She lost the baby on Victoria Station near the Brighton railway line. So both A and B are correct. Basically what happened here was that our Miss Prism, she was very she was a gajni sort, like उसकी memory बड़ी कम थी, कमजोर थी. So she could not remember things. उसने एक नॉवल लिखा तो उसका मैन्युस्क्रिप्ट उसने उस फ्रेम में रख दिया, प्रेम्बुलेटर में जहाँ पे बेबी होना था, और बेबी को उसने एक्सीडेंटली बैग में रख दिया और बैग को वो भूल गई और फिर खुद भी भाग गई वहां से डर के कि ये मुझ पे इल्जाम लग जाएगा. Miss Prism has interchanged her manuscript of novel with baby boy. Jack leaves and returns with the same handbag. Jack वही handbag लेके आता है. Jack tells Miss Prism that he was the baby inside. कि वो बच्चा उसके अंदर जो था वो मैं था. And he considers Miss Prism his mother. कि शायद मैं इसका बेटा हूं. Lady Bracknell informs Jack that he is the son of her sister. कि वो इसका बेटा नहीं बल्कि ब्रैकनल की बहन का बेटा है. This realization made Algernon Jack's brother, दोनों भाई हो गए क्योंकि वो भी उसकी बहन का बेटा था. Augusta tells Jack that he was named after his father, कि उसको उसके बाप के पीछे नाम दिया गया. Jack starts looking for his father in army list since he was an army officer. The complete list of Jack and Algernon's father, name of Algernon's father was Earnest John Moncrief. So ironically, or like coincidentally rather, both of them are Earnest. दोनों के नाम में Earnest आता है उनके बाप की तरफ से, जिसका इनको पता ही नहीं था. So girls are happy to know that their name is Earnest.
The play is a satire on snobbery of aristocracy. The play is a trivial comedy for serious people. तो ये ऑस्कर वाइल्ड के अपने अल्फाज हैं कि this is a trivial comedy for serious people. Oscar Wilde has also written a masterpiece short story, The Happy Prince. So he's well known for it. Oscar Fingal of Flattery Wilde, Wilde, this was his real name, was an Irish poet and playwright. So he was basically an Irish. Oscar Wilde was one of the most popular playwrights in 1890s. Wilde was initially buried in Cemetery de Bégues outside Paris. So पहले initially वहाँ पे था, then afterwards he was his grave was removed to somewhere else. So this was the importance of being earnest by Oscar Wilde, a serious comedy for like a trivial comedy for serious people.